Welcome back in the fourth class of vector theorem. So this is something special. The fourth class is something special. Some of my favorite theorems, and they have been asking these theorems again and again. So uh, let's begin. I'll be sharing the screen first. Uh, All right. So this is something which we have done in the last class, coplanarity of 4 points. Let's begin with internal division. You have already done this theorems in your 10th standard. So we used to call this a section formula, but it was actually internal division formula because you were not aware in 10th standard that there are two types of division. One is internal division and external division. Another is external division. So we are going to study both internal and external theorem. So let A bracket A bar, which means the position of vector of A is to be taken as A bar. Then position vector of B is B bar, be any 2 points in space, and R, whose position vector is R bar, be a point on the line dividing segment AB, dividing it internally in the ratio of M is to N. Then R bar is equal to MB bar plus NA bar divided by M plus N. And see, whatever is written over there in green color, that is, it has been asked in March 98, 2001, 2006, 2015, 2019, 2022, October 96, October 97, October 2004. ये October क्या है? So a few years back, pre-COVID, actually the exams used to be in March and October. राइट सो अभी वो जो जुलाई का अटेम्प्ट होता है ताकि आपका एक साल बचे, वो नहीं अवेलेबल था. Now, in July 2017, again, there is one more. मतलब उसके साथ एक question भी पूछा था. That theorem was there, but along with that, एक additional question पूछा था. Hence, find the position vector of R which divides line segment joining the points A and B internally in the ratio 2:1. So, I will also give you, because we are not solving as such problems, but I'll give you the trick how to remember this formula. इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं. Let us try to understand इसको prove कैसे करना है. Prove करने के लिए मैं भी आपको conceptually बहुत strong बनाऊंगा ताकि आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं. So इधर का इधर ले सकते हैं, हम देखते हैं कैसे करना है. So let me first understand this. This is O because position vector के लिए एक fixed point होता है. Let this point be A. Let this point be B, so that OA bar is position vector of point A, OB bar is position vector of point B, and this point R, which divides internally in the ratio M is to N. That means AR is your M and BR is your N. Not exactly equal to N, but ratio M is to N is there. Right? So this is your R bar. Okay, so this is your R bar, this is your A bar, and this is your B bar. Okay, now as the statement says, आपको ये समझ में आ गया तो अगला वाला तो आराम से समझ में आ जाएगा. Now statement says that R divides segment AB internally in the ratio M is to N. I am writing the statement R जो divide कर रहा है internally in the ratio M is to N. So R divides segment AB internally in the ratio M is to N. Right? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो मुझे दिया गया है in the question itself. M is to N. All right. What is the meaning of the statement? R is dividing AB internally in the ratio M is to N. Ratio का मतलब, इसका मतलब AR upon RB, इसका वैल्यू कितना हो गया? M upon N. इसका वैल्यू कितना है? M upon N. Ratio मतलब division. So you have to understand 4 words. Sum is addition, difference is subtraction, product is multiplication, and ratio is division. Right? So whatever they have given,
मैं उसका, दिस इज द स्टेटमेंट दे हैव गिवन टू मी, आई हैव रिटन दिस एज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, मतलब उसका मतलब जो है मैंने लिखा है ए आर अपॉन आर बी इज इक्वल टू एम अपॉन एन, इसका मतलब है. Now if I cross multiply NAR is equal to MRB हो जाएगा, राइट, इन मैग्नीट्यूड. इसका मतलब मैं अभी भी जो बात कर रहा हूं, हमारा चैप्टर जो है वेक्टर्स है, बट whatever I am talking right now is in terms of magnitude and not the vectors. वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड आता है, डायरेक्शन होता है, दो चीजें होती है. So let me now talk about, यहां तक मैं बात कर रहा था मैग्नीट्यूड की. Till this step I was talking about magnitude. Let me now talk about direction. If I say, if I look at AR and RB, AR and RB, which means AR bar and RB bar are in same direction. कहां से आया ऐसे मुझे लग रहा है? No. Look at the diagram. AR bar कहां जा रहा है? From here to here AR bar जा रहा है, and RB bar, they are in same direction. Now in scalar multiplication, again यहाँ पे scalar multiplication आ गया. अगर डायरेक्शन सेम है तो स्केलर पॉजिटिव होगा, अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो स्केलर निगेटिव होगा. If the directions are same, that means the scalar is positive. If the directions are negative, if the directions are opposite, that means the scalar is negative. That means NAR bar, now because they are in the same direction, will be equal to MRP bar. Right? Now, यहाँ से लेके आगे बहुत ही सिंपल है. AR bar is R bar minus A bar. RB bar is B bar minus R bar. What I can do now is simply multiply. इसके आगे सारा natural process है. Everything is very natural. Okay. Now I will take R bar on the left hand side. So this R bar on the left hand side becomes plus NR bar. And naturally I'll take other things on the other side. So NA bar from the left hand side, NA bar को मैंने लेफ्ट हैंड साइड से उठाया और राइट हैंड साइड लेके गया, तो मेरे पास NA बार बना प्लस. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड नेचुरल प्रोसेस इज टेक R bar common. Natural process is take R bar common. Right hand side is MB bar plus NA bar. Then the last thing what I'm going to do is R bar is equal to MB bar plus NA bar divided by M plus N. This is the proof. Now the question might arise. अभी ये क्वेश्चन शायद आपके दिमाग में नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर सोचो, राइट? इसके ऊपर थोड़ा सोचो. Now my question is very simple. Now we took AR upon RB. Can we take AR upon BR? AR upon BR? Okay. When I ask this in the class, normally students say no sir, because they are in opposite direction. Yes, they are in opposite direction, but right now I am not talking about direction, I am talking about the magnitude. ओके. नाउ AR अपॉन BR लेते हैं गलती से तो चलेगा, इसीलिए दैट्स द रीजन आई एम सेइंग कि रट्टा मारने की जरूरत नहीं. फर्स्ट थिंग यू विल बी राइटिंग R डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो M:n. उसका मीनिंग AR अपॉन RB इज इक्वल टू M अपॉन N है, या फिर AR अपॉन BR इज ऑल्सो इक्वल टू M अपॉन N, बिकॉज दे आर द मैग्नीट्यूड्स. मैग्नीट्यूड्स मतलब लेंथ होता है, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. नाउ बाय मिस्टेक अगर मैं AR अपॉन BR ले रहा हूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली डोंट वरी अबाउट दिस. आई विल राइट NAR इज इक्वल टू MBR. अगेन दिस हियर आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, राइट? नाउ बट दिस टाइम इफ आई लुक एट द डायग्राम, अब देखो क्या हो रहा है. अगेन यू डू नॉट हैव टू वरी, यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व द डायग्राम. NAR bar, sorry, AR bar and BR bar. Look at the diagrams. AR bar is in this direction. BR bar is in this direction, which means are in opposite direction. Now, because they are in opposite direction,
because they are in opposite direction, what will happen is NAR bar will be equal to minus MBR bar. Okay. Now, once again, I'm repeating, this is one way to solve the problem. This is another way. दोनों सही है. रट्टा मारने की जरूरत नहीं. You have to understand. I write this statement, which is the given statement. मैंने यहाँ उसका मीनिंग लिखा. तो ये हो सकता है कि AR upon RB लिखो. ये हो सकता है कि AR upon BR लिखो. तो जो आप लिख रहे हो, इस हिसाब से आपको काम करना है. Now, because opposite direction है तो माइनस साइन आ गया. अच्छा, n AR बार क्या है? R बार माइनस A बार माइनस M BR बार क्या है? R बार माइनस B बार. Now, जैसे पहले किया था, I will just open the bracket n R bar minus n A bar. All right. Now, is equal to minus M R bar plus M B bar. आर बार वाले टर्म एक साइड आ जाएंगे. एम आर बार प्लस एन आर बार इज इक्वल टू, वंस अगेन यू ऑब्जर्व, हमको वही मिला है जो यहाँ पे मिला था. सो यू डू नॉट हैव टू वरी कि ए आर अपॉन बी आर लिखे, ए आर अपॉन आर बी लिखे. यू जस्ट ऑब्जर्व द डायग्राम, डायरेक्शन के हिसाब से अपना काम करो. राइट. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व फॉर द थियरम. राइट. बट now if you observe, अगर ये हमको पूछा गया, if this is the question for us, hence find, right, then ये कैसे करना है? Let's try to understand now. The point A is 1 minus 2 1 and B is 1 4 minus 2. A is 1 minus 2 1 and B is 1 4 and minus 2. 1 4 and minus 2. I am solving this problem for you to understand. हालांकि ये सारा theorems का काम चल रहा है, but generally एक problem का revision हो जाएगा and how to write the formula without actually by hearting the formula. Okay, so let me say that let position vector of A equal to A bar equal to I cap minus 2J cap plus K cap, because यहाँ पे 1 minus 2 1 है. Then I'll write position vector of B equal to B bar equal to I cap plus 4J cap minus 2K cap. Right, as usual, position vector of R जो डिवाइड कर रहा है is equal to R bar है. Alright, coming back to the question, कैसे करना है? Ratio 2:1 दिया है, ratio is 2:1, ratio is given to us as 2:1. Whenever this kind of problem is there, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. हमको क्या लिखना है? किसको डिवाइड कर रहा है? ए बी को डिवाइड कर रहा है. रेशियो क्या है? 2:1 है. राइट. फर्स्ट व्हाट इज डिवाइडेड? ए बी इज डिवाइडेड. व्हाट इज रेशियो? 2:1. एक दूसरे के नीचे लिखो और क्रॉस कर दो. राइट. इन दैट केस आर बार बिकम्स 2 बी बार. क्या हो जाएगा? 2 बी बार. और अभी हमने एक्सटर्नल डिवीजन डिस्कस नहीं किया है, बट एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन में एक ही चेंज है, बीच में माइनस साइन है. तो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो 2 बी बार अगर इंटरनल है तो बीच में प्लस आएगा, एक्सटर्नल है तो बीच में माइनस आएगा. सो 2 बी बार प्लस 1 ए बार divided by 2 plus 1. Now what you are going to do? You are simply going to replace the vectors values. R bar is equal to 2 into B bar is I cap plus 4J cap minus 2K cap plus A bar is I cap minus 2J cap plus K cap divided by 2 plus 1, which is 3. Now I can write it as 3. Let me open the bracket. This becomes 2I cap plus 8J cap minus
4k cap plus I cap minus 2j cap plus k cap. The whole thing divided by 3. R bar is equal to 3I cap plus 6j cap minus 3k cap. Luckily, all these are factors of 3. तो कर सकते हैं divide. R bar can be written as 3, common लेते I cap plus 2j cap minus k cap. The whole thing divided by 3. 3 gets cancelled and my final answer is I cap plus 2j cap minus k cap. Right? So this is about the extension of the problem. Coming back to this, I will again repeat क्या बोला है उस हिसाब से हम काम करते हैं. R divides segment AB internally in the ratio of 2:1. Sorry, m is to n. So first thing, you are going to write the statement. Second thing, you are going to write the meaning. AR upon RB is equal to m upon n. क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आगे लिख रहा हूं मैंने इन मैग्नीट्यूड. इसका मतलब मैं अब तक जो बातें कर रहा हूं मैग्नीट्यूड के टर्म्स में है. उसके बाद डायग्राम में जाओ, डायरेक्शन देखो, अगर सेम डायरेक्शन है तो स्केलर प्लस होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन है तो स्केलर माइनस होगा. इन दिस केस दे आर इन द सेम डायरेक्शन तो स्केलर प्लस हो गया. सिंप्लीफाई करो एंड यू गेट द आंसर. नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, ये भी वैसे ही करना है. But here you have to understand O is there, A is there, this is B, okay, and R is dividing externally. R is dividing externally, which means this part is M. ये वाला part जो है वो M का है, and this part जो है वो N का है. Right? Again, this was asked 2 times, March 2008 and July 2023. How to prove this? अगर आपको पिछले वाला समझा है ठीक से, so this becomes very easy. First, what I'm going to write is the statement given to me by the boards or in the question. Okay, so this is A bar, this is B bar, and this is R bar. So I'm going to write the statement R divide segment AB externally in the ratio M is to N. Wait a minute, huh? I just need to check something. Okay, meaning of this, AR upon RB, AR upon RB, RB लू BR लू कुछ भी आपकी मर्जी, is M upon N. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, NAR is equal to MRB, right? This is in magnitude, which means अभी तक मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात कर रहा हूं. Let's talk about the direction, but AR bar and RB bar are in. देखते हैं कौन से डायरेक्शन में है. AR bar ये डायरेक्शन में जा रहा है, RB bar ये डायरेक्शन में जा रहा है. So can you observe their opposite direction? They are in opposite direction. Now, because they are in opposite direction, NAR bar is minus MRB bar. आगे क्या करना है? बस वही जो पहले किया था, simply solve करते जाओ अभी. What is AR bar? AR bar is R bar minus A bar. What is RB bar? RB bar is B bar minus R bar. ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, एन आर बार माइनस एन ए बार इज इक्वल टू माइनस एम बी बार प्लस एम आर बार, सॉरी एन एम बी बार. टेक इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं, इसको इधर लेके गए,
और इसको इधर लेके गए, राइट? सो व्हाट विल हैपन इज if I take mb bar on the left hand side, it is mb bar minus na bar as it is. nr bar is taken on the right hand side. Abhi, I'm writing in the opposite way. I'm taking r bar common, so m minus n r bar is equal to mb bar minus na bar. So r bar becomes mb bar minus na bar divided by m minus n. Once again, if you have any questions based on this in the exam, you have to understand किसको divide कर रहे हैं, ab को, कौन से रेशियो में, m/n, ऐसे क्रॉस जाना है. सो mb बार na बार, अगर बीच इंटरनल है तो बीच में प्लस आएगा और एक्सटर्नल है तो बीच में माइनस आएगा, राइट? Now midpoint theorem. So again similar thing, but this time if you observe, r is the midpoint, right? Now ज्यादा तकलीफ नहीं है यहाँ पे. अच्छा, मिड पॉइंट है तो इंटरनल डिवीजन होगा, राइट? सो इफ आई ड्रॉ अ डायग्राम फॉर दिस, ओके, I draw a rough diagram so that you can understand. Oh, okay, this is the case AB, okay, and इस बार R is the midpoint, okay, this time R is the midpoint. O इधर A है, सो पहली चीज तो इंटरनल डिवीजन है, तो इसके बारे में सोचना है अपने को, दिस वाला. दूसरी चीज, व्हेन R is a midpoint, R is the midpoint of AB, which means AR upon RB जो है ये बनेगा 1/1 बिकॉज इक्वल रेशियो, इक्वल लेंथ है, राइट? विच मीन्स m अपॉन n जो है ना, m का वैल्यू भी 1 और n का वैल्यू भी 1. नाउ वी नो दैट इंटरनल डिवीजन के हिसाब से दिस बिकम्स mb बार प्लस na बार divided by m plus n. So R bar is 1b bar plus 1a bar divided by 1 plus 1, which means R bar equal to a bar plus b bar divided by 2. This is called as midpoint formula. The last one, I have already proved this in जो मैंने एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स का पार्ट का एक सीरीज बनाया है जो अभी कंटिन्यूशन में है, उसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है. ये मतलब मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट, ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, उसमें इसका प्रूफ दिया है मैंने. बट नाउ सेपरेटली अगर करना है, सेपरेटली अगर सीखना है, तो लेट्स सी हाउ दिस कैन बी डन. Okay, let me try to explain you with the help of first diagram. तो पहले तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं. Okay, now what is a centroid? Centroid is a point where the medians intersect each other. Medians मतलब क्या है? ऑपोजिट साइड को मिड पॉइंट निकालो, ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट लेके हमको ज्वाइन करना है, उसको कहते हैं मीडियंस. सो इफ दिस इज अ ओरिजिनल ट्राइंगल, राइट, and a D is the midpoint, that means AD is a median, that is one. Second thing, हमने बचपन में स्कूल में ये सीखा है कि this medians they intersect each other, that is called as, ऐसे तीन medians होंगे तो एक पॉइंट पे कहीं intersect होंगे तो जो पॉइंट है उसको G, generally it is denoted by G, and we have already proved in the school that school days कि
सेंट्रॉइड ऑलवेज डिवाइड द मीडियन इंटरनली इन द रेशियो 2:1। अगर इसका प्रूफ देखना है तो इसका प्रूफ भी मैंने किया है। मैंने फिर से रिपीट करता हूँ, वो जो सीरीज है एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स टू ट्रिग्नोमेट्री वाली, तो उसमें आप जाओगे तो मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगुलर कॉन्करेंट वो भी मैंने प्रूव किया है, 2:1 रेशियो होता है। राइट तो फिलहाल आपको नहीं मालूम है, नहीं सीखा था, नहीं याद है, डू नॉट वरी, याद रखो अभी 2:1 होता है। centroid always divide the median internally in the ratio 2:1। ऑलराइट, तो मैंने आपको ना वो प्रॉब्लम सॉल्व करा के दिया था ना पहले वाला इधर, इसका मैंने प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था यहाँ पे, याद है? तो इसलिए किया था कि आपको समझना चाहिए कि इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, ये हम यहाँ पे वापस सीखेंगे। राइट, ओके, लेट मी स्टार्ट विद द प्रूफ। ओके, नाउ consider triangle ABC। ठीक है, let AD be the median। ठीक है, जब मीडियन की बात आती है, AD is a median, that means therefore D, मान लो उसका पोजीशन वेक्टर D बार है, is the midpoint of, मीडियन का मतलब ही है ऑपोजिट साइड पे मिड पॉइंट लेना है, ऑफ साइड BC। ठीक है, तो इसका मतलब D बार जो है इज इक्वल टू B बार प्लस C बार डिवाइडेड बाय 2 हो गया। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो क्या क्या किया हमने, एक ट्राइंगल कंसीडर किया है, लेट AD बी द मीडियन, बिकॉज सेंट्रोइड हमेशा मीडियन पे होने वाला है, तो AD बी द मीडियन, तो D दैट मींस D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, एंड हमने मिड पॉइंट फार्मूला जो अभी हमने प्रूव किया था यूज किया। राइट, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, लेट G with position vector G bar be the centroid of triangle ABC। ठीक है, अगर वो सेंट्रॉइड है तो इसका मतलब ये भी है, देयरफॉर G डिवाइड AD internally in the ratio 2:1। alright, now small thing you have to understand once again, किसको डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, AD को। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1। हमको कैसे देखना है, क्रॉस देखना है। ऑलराइट, इंटरनल डिवीजन है तो प्लस आएगा, एक्सटर्नल डिवीजन है तो माइनस आएगा, विच मीन्स G बार, इसका फॉर्मूला कैसे लिखे, 2 के साथ कौन है, D बार है, 2D बार, 1 के साथ कौन है, A बार है, डिवीजन इंटरनल है तो प्लस होगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। आई होप दिस इज अंडरस्टूड बाय यू। वंस अगेन देखो, किसको डिवाइड कर रहे हैं, AD को। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 2:1। क्रॉस जाएंगे, 2 के साथ D बार आ गया, 1 के साथ A बार आ गया। इंटरनल डिवीजन है तो बीच में प्लस, एक्सटर्नल डिवीजन है तो माइनस, बट यहाँ पे तो इंटरनल है तो इसलिए मैंने प्लस लिख दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 अगर देखा जाए तो 2, what is D bar, D bar is B bar plus C bar divided by 2 प्लस A बार बचा है मेरे पास, and the whole thing divided by 3। now if you observe 2 and 2 gets cancelled, very simple, G bar, what is remaining in the numerator is A bar plus B bar plus C bar divided by 3। I hope you have understood today's theorems। all right, now
All right, so some which diagram NR bar. Okay, I'll show you the diagram once again. I think you are talking about internal division. All right. All right. So you're talking about internal division. So let me show you the diagram and how do I draw the diagram. Okay. Good question. Okay, चलो ठीक है. So once again I'll show you the diagram. ये diagram कैसे निकाला है. So somebody is asking for the diagram. A and B are any 2 points in the space. ठीक है. I hope you can see this. A and B are any 2 points in the space with position vectors A bar and B bar. तो ये A bar होगा, ये B bar होगा. पोजीशन वेक्टर कहां से आता है? एक फिक्स पॉइंट होता है. 99% ऑफ द केसेस इट इज द ओरिजिन. सो ये मेरा हो गया ए बार एंड ये मेरा हो गया बी बार. नाउ ये केस में बता रहे हैं कि आर डिवाइड्स इंटरनली. तो ये इंटरनली कहीं पे आर है, कहीं पे भी है ऑन द लाइन ए बी. सो दिस बिकम्स माय आर बार बिकॉज अगेन इट इज विथ रिस्पेक्ट टू ओ. ऑलराइट. एंड इफ यू ऑब्जर्व एक्सटर्नल डिवीजन वाला डायग्राम, सो यहां पे मेरा ए है, मेरा बी है पहले से, राइट. पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओ. ठीक है. दिस इज माय ए. नाउ आर इज डिवाइडिंग एक्सटर्नली. सो आर इज डिवाइडिंग एक्सटर्नली, तो बाहर होने वाला है. इंटरनल मतलब अंदर होगा, एक्सटर्नल मतलब बाहर होगा. तो ये कहीं पे बाहर होगा. ठीक है. तो दिस इज माय आर. यहां पे मेरा आर आ गया. दिस इज हाउ द डायग्राम इज ड्रॉन. And while looking at the direction, we are looking at the, now here I said opposite because AR bar is going in this direction, correct? And RB bar is in this direction. They are in opposite direction in this case. Whereas if you observe this previous वाला, यहाँ पे अगर देखा जाए तो AR bar in this direction, RB bar in the same direction. यहाँ पे same direction है, इसलिए वो positive है. I hope you have understood this part. Okay. So Ajay, if you have any other doubt or anyone is having any other doubt, so I think you can communicate with me on this number. You can send your doubts on this number and I can solve your doubts individually. All right. That's it for now. Thank you very much. See you in the next class.